పెద్ద నోట్ల రద్దు చెలామణిపై దాఖలైన పిటిషన్ను 5 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనానికి సుప్రీంకోర్టు బదిలీ చేసింది. రాష్ట్రాల్లోని హైకోర్టుల్లో దాఖలైన పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టే విచారిస్తుందని స్పష్టం చేసింది. పాత నోట్ల చెల్లుబాటుపై మధ్యంతర స్టే ఇచ్చేందుకు నో చెప్పిన సుప్రీం ఈ విషయంలో ప్రభుత్వానిదే తుది నిర్ణయంగా తేల్చింది. వారానికి 24,000 రూపాయలు ఇస్తామన్న కేంద్రం ఆ హామీ నిలబెట్టుకుని ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. Referred to a larger bench, which is now constitution bench, because this bench was comprising 3 honorable judges. Now this matter will be heard by a larger bench, which is minimum 5 judges benches, which will be formed by his lordship as per today's order. इस पूरे मामले की लीगलिटी जो डिमोनेटाइजेशन है ये लीगल है या नहीं, इसकी सुनवाई 5 जज की बेंच करेगी. जहां तक बात है पैसे की निकासी पे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार उस पर जनता के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपना समय समय पर इसको रिव्यू करे, अपने हिसाब से निर्णय ले. और जहाँ तक जो 500 और 1000 की नोट की चलने वाली बात थी वो उस पर कोई फैसला नहीं दिया. जो सरकार का डिसीजन था उस पर उन्होंने एग्री किया है. अगली सुनवाई, अब इसकी आगे की सुनवाई 5 जज बेंच करेगी. और आज जितने भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी, हाई कोर्ट में थी, उन सबको सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुना जाएगा. 5 जज बेंच सुनेगी. सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम 24,000 रुपए वाले मामले में बहुत अहम तरीके से गवर्नमेंट को कहा है और कमेंट किया है उन्होंने उसमें कि आपने अगर 24,000 देने की बात की थी तो 24,000 क्यों नहीं दे पा रहे हैं. अगर आप 24,000 नहीं दे पा रहे हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन के द्वारा उस चीज को अमेंड करके कम कर देना चाहिए था. तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक कमेंट किया है. कोर्ट का शायद ये मानना है कि अगर आपने कोई परेशानी लोगों के लिए दूर की है तो आप ही दूर कीजिए, आप ही उस परेशानी को ठीक कीजिए. और कोर्ट ने इस बात को लेकर अपनी गहरी चिंता अपने इस ऑर्डर में जताई है.